नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. Thank you for being here this evening. Before we start with the program, it would be only fair if we remember our beloved Bapuji on this day, that is Gandhi Jayanti. So let's have some quiz questions before we begin with the program. So the rules of the game is whoever knows the answer has to raise the hand. Okay, so let's begin, inshallah. First question. Name the autobiography written by Mohandas Karamchand Gandhi. Anybody here? गांधी जी ने अपनी खुद की जिंदगी में एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम बताना है आपको. Okay, there is one brother. We will pass on the mic just a minute. I experiment with good. Great. Let us give him a big round of applause here. Yes, the full name is The Story of My Experiments with Truth. Great. Who was the first person to call Gandhi ji as half-naked fakir? वो कौन थे जिन्होंने गांधी जी को ये लक़ब दिया? Subhanallah. Very good, mashallah. Could you please introduce yourself, brother? Your name? Maksudana. Okay. I will remember you. Two of you who had a very big role in the freedom struggle. Okay, now this is challenging. So हम लोग सब 21st century के लोग हैं और हम लोग critical thinking में जीते हैं. So this question is for those who are good at critical thinking. गांधी कर रही हूँ जिसका connection periodic table से है. Science teachers. UN के हिसाब से mental laziness one of the 40 conflicts of the world है. So कहीं हम लोग इसकी शिकार तो नहीं है. Let us tax our minds and think of the answer. इसको मैं हिंदी में बताती हूँ कि गांधी जी की जिंदगी का कोई एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल से आपको कनेक्ट करना है और उसका जवाब निकालना है. हम सब जानते हैं पीरियोडिक टेबल. Anybody wants to try or should I give it out? Okay, think of some elements that we find in the periodic table. Yes, and what is that movement? So who was the one to answer? If I could know his name. Okay, yeah. He's okay, Dr. Naushan, I suppose. Yes. Alhamdulillah. That was a challenging one. Okay, we move to the next question. When you think of Henry David Thoreau, what comes to your mind? He was the one to inspire Gandhiji to start a movement. So what was that movement? इस टॉपिक पे जिससे इंस्पायर होकर गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया. उनको वो नाम इतना पसंद नहीं था बिकॉज ही वांटेड अ पॉजिटिव नेम. तो उन्होंने उस मूवमेंट का नाम रखा सत्याग्रह मूवमेंट. आपको इंग्लिश में नाम बताना है. व्हाट वाज दैट? ऑल ऑफ अस हैव लर्नड इट. हिस्ट्री में हम सब सीख चुके हैं. Okay, the first letters are C, D. Name, what comes to your mind? Madeline Slade, a British woman who was very closely associated with Gandhiji, and he became very infamous also at one point of time. Who was she? She worked very closely with Gandhiji. You must have seen in all the movements a woman accompanying him.
called by a famous name. She had an Indian name also. In the Mahabharata, and the part of it is Bhagavad Gita, and we talk here about Krishna, a name associated with Shri Krishna. Of course, it was not Ram. And for this, we need to know our history very well. It was Meerabai. Okay, we move further. And easy trust throughout his life. Could you tell me the name of any one of his ashram? Very famous. Sorry? Yes. So our chief guest has cracked it. Great round of applause for him. How can we forget Sabarmati Ashram? I have been to that place and I love that place. It was a place where the meetings took place of the Indian national movement. It was established in the year 1915. There is another name of Sabarmati Ashram. Does anybody know it? It is related to the place where it is located. The ashram India में है. You can raise your hand and tell me. Okay, so everybody agrees कि चारों India में नहीं है. Okay, fine. So I give out the answer. 2 are in India. क्यों? कहाँ है? A very famous place related to his life. He spent many years over there, almost 2 decades, more than 2. Mic. Okay, please pass the mic. Yeah, there is a mic. I think in South Africa. Yes, absolutely right. A round of applause. Please join your hands together. Who can name the wife of Gandhiji and tell me how many children did he have? 2 questions in 1 question. Sorry. Okay. Children, how many children did he have? Nobody knows how many children Gandhiji had. He had 4 sons. Okay, he had 4 sons, no daughter. Shumail Ghayas. Please join me in welcoming Mr. Shumail Ghayas to deliver the welcome address. Assalamu alaikum and very good evening to all of you. मैं दिल की गहराइयों से आप सबको यूनाइटेड पीस फाउंडेशन के 10 साल की सेलिब्रेशन में खुशामदीद करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आज हम सब मिलकर इस मंजिल पर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं। इन 10 सालों में हमारी फाउंडेशन ने यतीमों, विधवाओं और मोहताज लोगों की खिदमत की है, अपनी तालीम, सेहत और उम्मीद फराहम की है। हमने ऑर्फन स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम और फूड प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स शुरू किए जो बहुत से लोगों की जिंदगियां तब्दील कर चुकी हैं। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन आप सबकी दुआओं, सपोर्ट और खुलूस से हमने बहुत सी चुनौतियों को पार किया है। हमारे डोनर्स, वॉलंटियर्स
और कम्युनिटी मेंबर्स का जोश और अहम किरदार इस मिशन में कभी नहीं भूला जा सकता। इमाम के नाम है जिन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े होकर हमारी हिमायत की है। आज हम सिर्फ अपने मकसद को याद नहीं करते बल्कि हम अपने मुस्तकबिल की तरफ भी देखते हैं। हमारा इरादा है कि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं और मजीद लोगों तक अपने पैगाम को पहुंचाएं। आप लोगों की मौजूदगी हमारे लिए इज्जत की बात है। उम्मीद है कि आप इस शाम को हमारे साथ एंजॉय करेंगे और हमारे साथ सफर की कहानियों को सुनकर हमारे मिशन को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डालेंगे। बातों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक दफा फिर आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। Thank you, sir, for that warm welcome. So we have our esteemed dignitaries here to honor our esteemed chief guest. I request our founder and CEO, Dr. Zia Ahmad, to join me on stage. Of Sarai Kila to the stage. Please present the memento and bouquet to our chief guest as a token of appreciation for their presence and support. Mr. Waris Imam, Principal of Al-Kabir Polytechnic College, Jamshedpur. I request the Imam. Join me on stage. Mahendra Narayan Madhup Jha, a retired government teacher, to the stage. Mr. Mahendra Narayan Madhup. I now invite our esteemed guest of honor, Mr. Rizwan Ahmad, ex-headmaster of Kabir Memorial Urdu High School. Ashad Akhtar Khan to join me on stage. I would like to invite our esteemed guest of honor, Mr. Naresh Singh ji, Legal Advisor, Nagar Vikas Government of Jharkhand. Ma'am, and we would request him to share his thoughts with us. Dignitaries on the dais and dignitaries of the dais and all the people assembled here. A very warm welcome to all of you. First of all, I am grateful to Allah that He has given me this opportunity to be standing before you. I am grateful to United Peace Foundation जो उसने इस नाचीज को इतनी इज्जत शर्फ बख्शियाँ बोला। I have been advised that I have only 5 to 8 minutes in hand in which I need to present certain views of mine.
So, to be honest, it will be bits and bits of pieces of information which I would like to be sharing with you during the course of my association with Al-Qadir as well as over the years where I have worked. So let me begin with, whether it be organizations or whether it be human beings, what is of paramount importance is the impact they create on the society. और ये impact कैसे हो? And how does the personality grow? What makes your personality that you get impacted by it? It's very simple and very subtle, you know. There are 3 or 4 most important things. In brief, it is responsibility, accountability, to impress upon the society. If you want to create a mark, you have to be following these norms like accepting responsibility for your actions, being accountable for the results, taking ownership of your mistakes, and maintaining transparency in what you do. And doing all these with utmost honesty, humility, and ensuring sustainability. Why I have mentioned this is that whether you talk about organizations, आप इदारों की बात कीजिए, आप लोगों की बात कीजिए, आप NGOs की बात कीजिए, आप किसी भी तरह की आप एक्टिविटीज की बात कीजिए, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और हम अपने रिजल्ट्स के लिए अकाउंटेबल हों। अक्सर देखा जाता है कि जब कामयाबी मिलती है तो कहीं न कहीं वो इंसानी फितरत आगे आ जाती है कि हम उसका श्रेय ले लेते हैं, और कभी नाकामयाबी मिलती है तो हम 10 तरह के बहाने खोजने लगते हैं कि क्या वजह थी, हम क्यों नाकामयाब हुए। ये बहुत ज़रूरी होती है कि जब आप लीडरशिप रोल में रहते हैं, वेदर इट माइट बी इन योर फैमिली, आप जो घर है वहाँ पर आप उसके लीडर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके लीडर हैं, एक स्टेट है आप उसके लीडर हैं, या एक मुल्क है आप उसके लीडर हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो जिम्मेदारियाँ रहती हैं आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो एक्शंस होते हैं उसके रिजल्ट्स हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको उसको अपनाना पड़ेगा। और इन सब से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, कि हम जो काम कर रहे हैं हम वो इंसाफ के साथ कर रहे हैं और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सबके लिए एक है। एंड डूइंग विद दिस ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, ह्यूमिलिटी, आरसी के साथ, और सस्टेनेबिलिटी। Why I'm saying this because I was happy to see this that United Peace Foundation is being celebrating 10 years of their existence. अक्सर हम देखते हैं कि लोग कुछ काम करते हैं नेक ख्वाहिशात के साथ, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते। तो इसको नजर में रखते हुए आपको काम करना पड़ता है। अब इससे आगे हम चलते हैं, उर्दू में एक लफ्ज है तालीम और तरबियत, दूसरी चीज हिंदी में हम उसको कहते हैं शिक्षा और संस्कार। I was going through the leaflet which was provided by United Peace Foundation, and I found that they have a focus on education. They are focused on food, and they are focused on orphan, widow, जिनको ये खिदमत करते हैं। बात की जाती है तो शायद हम ये फर्क नहीं कर पाते हैं कि what is the difference between education and qualification. We fail to differentiate between education and literacy. We fail to differentiate between education and knowledge. We fail to differentiate between education and learning. And we fail to differentiate between skill and knowledge. ये बहुत अहम बात है कि हम इनके फर्क समझ सकें। As far as education and qualification is concerned, being in this academic field, it pains me to realize that the focus on attendance, the focus on attending the classes by the lecturers, हर चीज Google पर नहीं करते। I hate trying to say that man was saying that might be to the hero was that gentleman Mr. Maksud Alam. I think that Maksud Alam is a pillar of Al-Qadir Polytechnic. Why I am saying this is that since I was sitting with this gentleman, I realized that when he always people are telling me, sir, and you are seeing the result. अगर आप किताबों को छोड़ दें और मोबाइल में अपना वक्त गुजारे। एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, इसकी 2 रिवायत है, एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और दूसरे कहीं पर हमने पढ़ा था कि सेम चीज सॉक्रेट्स के बारे में कहा गया है
एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उन्होंने पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि जो बात तुम हमको बताने जा रहे हो, क्या तुमने अपने कानों से सुना है या आंखों से देखा है? तो उसने कहा नहीं। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि जो बात हमको तुम बताने जा रहे हो, क्या इससे हमें कुछ फायदा है? उसने कहा नहीं। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जो बात तुम बताने जा रहे हो, तुम्हें कुछ फायदा है? उसने कहा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो फिर इस बात को मत बताओ। कहने का मतलब यह है कि अगर इसी महफिल में अगर मैं आपके कान में कोई बात कह दूं तो इट विल बिकम वायरल without you investigating whether whatever I am saying has got an iota of truth in it or not. और ये यही चीज है जो आज इस दुनिया में आग लगाई हुई है। हम मजा लेते हैं, I excuse myself for being so blunt, हम मजा लेते हैं कि किसी के घर में उसकी बेटी भाग गई, किसी के घर में कुछ झगड़ा हो गया। I try to understand that we don't share the pains of that person, we don't understand what that person is going through, but we are very happy in propagating these things. की जो हम बात कर रहे थे, today whenever my students come to school, it's not about one particular school, it's about all the schools. बच्चे आज नहीं आ रहे, वो ही कर रहे हैं। Hold them accountable. Why? Because जब हमारे टीचर्स, हमारे टीचर्स मीन्स आई एम टॉकिंग इन जनरलिटी, जब हमारे टीचर्स खड़े होकर लेक्चर देते हैं तो बच्चों के हाथ में आज मोबाइल्स होते हैं और वो गूगल करते हैं कि टीचर्स वो लेक्चर्स कहाँ से दे रहे हैं, और अगर उनको वो लेक्चर्स मिल जाते हैं तो क्लास में आते। So where is the accountability? Where is the responsibility of the teachers? Where is the accountability of the parents? Parents क्या इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चे कॉलेज जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? या उनका मंशा ये रहता है कि उन्हें कॉलेज में नाम लिखा दिया और वहाँ पीछे रखे? जिम्मेदारी टीचर्स की हो। So what they are coming for of education is to know the difference between right and wrong. It's not for job. जॉब के लिए पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। अगर आप बॉम्बे चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, people in English the word they say street smart. तो जो street smart लोग होते हैं वो अनगिनत पैसा कमाते हैं, बेशुमार कमाते हैं। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर सादे कमाते हैं। The purpose of education should be to enable the people to differentiate between right and wrong. नहीं है कि वो एजुकेटेड हो जाए। अगर आप आज न्यूज़ पढ़ते होंगे कि हाल ही की बात, शायद बैंगलोर में एक शख्स वो ऑडी चला रहे थे, ऑडी या BMW चला रहे थे और पीछे उनके वो ओला वाला एक ड्राइवर था, वो ब्रेक नहीं ले सका और ऑडी में खराश आ गई। उन्होंने उसको उठाकर पटक मारा। जिस तरह का हरकत किया, कुछ साल पहले एक हुआ था आपके बिहार के नजदीक रिजन प्लेस कॉलेज हाजा, वहां पर एग्जाम्स हो रहे थे और एक बच्चा वो एग्जाम देकर ट्रेन में चढ़ रहा था और ट्रेन चल रही थी, वो चढ़ रहा था, पानी लेने के लिए उतरा था, वो स्लिप कर गया, उसके दोनों पैर कट गए। दोनों पैर कट गए तो लोग खड़े तो उसका वीडियो बना रहे थे और वो गुजारिश कर रहा था कोई हमको इस ट्रेन में बैठा दो, बट दे वर मेकिंग वीडियोस। ये मोबाइल का जमाना है। और फिर अल्टीमेटली किसी ने उसको ट्रेन में बैठाया और उसके दोनों कटे हुए पैर बगल में रख दिया। वो PMCH पहुंचा, वहां उसके इलाज चल रहा। उसके बाद हमको हिम्मत नहीं भी उसको फॉलो करने की। डू वी कॉल आवरसेल्फ एजुकेटेड? हम रोज सुनते हैं 8 महीने की बच्ची, 10 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची के साथ बदतमीजियां होती है, वो बच्ची जान दे देती है। डू वी कॉल आवरसेल्फ एजुकेटेड? हम सिर्फ अक्षर पहचानना चाहते हैं और हम लफ्ज पढ़ना जानते हैं। वी आर नॉट एजुकेटेड। So that's why I said the difference between education and qualification, education and literacy, and education and knowledge. Now we talk about knowledge. आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया है, but again you call yourself educated? No. The difference between education and learning. अब बच्चों को ज्ञान की बात है, skill and knowledge. आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं we have to go for skill development, right? So does knowledge and skill development and education is interrelated? Whatever we do, no, it's not. अब ये मतलब क्या होता है? अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो वो एक समथिंग इन टोटलिटी, कि हम एक नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, हमारे टीचर, हमारे गुरु उस चीज को हो रही है। Am I able to apply that knowledge which I have acquired? And जब हम उसको अप्लाई करते हैं, whether I am able to utilize it for the benefit of human being and mankind? Am I able to do that?
If I'm able to do this, if I'm able to acquire the knowledge, if I have the capability to apply that knowledge for the benefit of humankind, I have the courage to defy if anything goes wrong, then I can say that I am educated. अक्सर हमें सुनने को मिलता है सर दुनिया ऐसे ही चलती है. Are you having the spine we can call ourselves educated? इसमें हम तीन चीज कहेंगे. इसकी वजह ये है कि जब हम यूनाइटेड पीस फाउंडेशन की बात करते हैं, there was an American psychologist called Abraham Maslow. और Abraham Maslow ने एक पिरामिड बनाई थी, एक हायरार्की. उन्होंने कहा था कि इंसान की बेसिक चीज होती है फूड, वाटर एंड क्लोथिंग. अगर एक भूखे और नंगे को आप तहजीब सिखाएंगे, आप उसको ज्ञान की बातें सिखाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा. सबसे पहली चीज उसका पेट भरा होना चाहिए, उसके सर पर छत होनी चाहिए, उसके तन पर कपड़े होने चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स. और जब ये तीन चीज पूरी हो जाती है, द नेक्स्ट थिंग पर्सन लुक्स एट इज सेफ्टी नीड्स. क्या वो अपने आप को महफूज समझ रहा है? जब ये चीज पूरी हो जाती है, देन इट गोज टू बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, कि हमको कोई चाहने वाला है, किसी को मेरा इंतजार है. एंड व्हेन दैट फुलफिल्स, then it goes to esteem needs, that is prestige. समाज में हमारी इज्जत, हमारी कदर है. और जब ये चीज पूरी हो जाती है, then it is called self actualization. तो वो इंसान फिर ऊपर उठ जाता है और वो एक साधु संत महात्मा बुजुर्ग बता दीजिए जो हो जाता है, जो सब चीज पूरी हो जाती है. तो हमको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि are we able to satisfy these basic needs of the masses, the psychological needs and then the self fulfillment needs. Talking about education, what is said, अगर आज आप देखिएगा, आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स है, इसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है. अगर आप देखिएगा तो बेसिक जो हमारे जमाने में जो एग्जामिनेशंस हुआ करता था, दैट टेस्ट वाज बेसिकली ऑफ रिमेम्बरेंस. हमारे टीचर्स जो हमको पढ़ा देते थे तो हम कितनी चीज को याद रख पाते हैं, हम कितनी समझ पाते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस उसको एड्रेस करते थे. लेकिन एप्लीकेशन कभी कोई टेस्ट नहीं करता था कि जो चीज हम पढ़े हैं, जैसे अगर मान लिया मैथ्स में हम इंटीग्रल या डिफरेंशियल या कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, हाउ आर वी गोइंग टू अप्लाई इट? हम मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, वेयर इज द एप्लीकेशन, हम उसको कहां से अप्लाई कर सकते हैं? एंड आफ्टर अप्लाइंग वाज एनालाइजिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी. हम बच्चों के समझते ही नहीं थे कि उनको इस बात की एनालाइजिंग की समझ है कि नहीं. देन इवैल्यूएशन एंड देन क्रिएशन. तो जब इस चीज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, you are not providing a complete education. Now I come to the next part, that is charity and philanthropy. Why I am saying this? Because again, this organization, what I talk about, अगर आप कोई नेक काम कर रहे हैं तो आपको इस्तिताअत की जरूरत पड़ती है. वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? There is difference between charity and philanthropy also. What is charity? Charity हमको किसी से हमदर्दी भी, हमने जेब से पैसे निकाले उसको देते हैं. What is philanthropy? Philanthropy is कि I provide some donations from my side to sustain the organization, to sustain the society. जो के टाटास करते हैं, विप्रोस करते हैं, वो लोग की वो लगातार मुद्दत के लिए चले आ रही थी. हमने जो चीज कर दिया, जैसे आप जिस शहर में रह रहे हैं जमशेदपुर, that is a part of philanthropy, that is not a part of charity. You need to understand the difference between the two. और ये हमारा दीन भी कहता है कि जब तुम एक हाथ से कुछ खैरात या ज़कात या सदका कर रहे हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले. आज हम फिलॉन्थ्रोपी और चैरिटी में क्यों इंडल्ज करते हैं? हमको सरकार से टैक्स बचाना रहता है, या हमको समाज में वाहवाही लूटनी रहती है, या हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि बड़ा सखी इंसान है. तो अल्लाह कहता है कि तुमको सखावत का दर्जा मिल चुका, तुम सखी कहलाना चाहते थे, तुम सखी कहला चुके, तुम हाजी कहलाना चाहते थे, तुम हाजी कहला चुके. अब तुमको आखिरत में उसका दर्जा नहीं मिलेगा. हमको इस बात का हमें एहसास होना चाहिए कि जब हम कुछ भी दे रहे हैं तो एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे को पता नहीं चले. अब ये कहा गया है कि आप उसकी निगाहों में निगाहें डाल के उसको सदका ज़कात ना दे, ताकि वो इंसान अपने को जलील ना समझे, बेसहारा ना समझे. हम कहाँ हैं? We need to understand, we need to analyze ourselves. और एक बात बता दूं आपको, दो वाक़या आपसे शेयर करता हूं. मादर चाहेंगे, शायद वक्त से हम ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू कट दैट शॉर्ट. तो एक बार ऐसा हुआ कि एक जहाज खराब हो गई थी और उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं था, कोई मिल ही नहीं रहा था. तो एक मैकेनिक, बूढ़ा में एक ज़ईफ मैकेनिक कहीं पर रहा करता था, उसको बुलाया गया. वो आके देखा और 2 हथौड़ा मारा और वो जहाज शुरू हो गई.
उसे पूछा कि आपका बिल क्या हुआ, उसने $100 बिल भेज दिया। तो जहाज का जो मालिक था हंस के बोला कि 2 हथौड़ा मारने का $100। तो उसने रसीद के पीछे जवाब दिया हथौड़ा मारने का $1, लेकिन कहाँ हथौड़ा मारना है उसके लिए $99। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हथौड़ा तो सबके हाथ में है, उस हथौड़े से मार के आप चीज को तोड़ दीजिएगा या बना दीजिएगा। दूसरी बात एटीट्यूड होता है, हम किस नजरिए से किसी चीज को देख रहे हैं, हम कितनी कितनी परेशानी जाहिर करें। थॉमस अल्वा एडिसन का आपने नाम सुना होगा। बचपन की कहानी कभी और मौका मिला तो वही बताएंगे, लेकिन जब वो अपने ज़ैफी में थे तो एक बार उन्होंने उनकी जो फैक्ट्री थी उसमें बेतहाशा आग लग गई और उनके बेटे दौड़े हुए आए, बोले कि फैक्ट्री जल रही है। वो जाके देखते सब कुछ खत्म हो रहा था। अब आज आप देखिएगा अगर किसी के साथ खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो वो इंसान हाय तौबा मचा देगा। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुला के बोला दौड़ के जो अपने वालदा को बुला के लाओ। तो बोला क्या बोलेंगे? उन्होंने कहा कि उनसे कहना है कि इतनी शानदार आग शायद जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगी। ये मेंटालिटी होती है कि हम कैसे किसी चीज को पॉजिटिवली देखते हैं। आज देखिएगा बच्चे इर्द गिर्द वो खुदकुशी कर रहे हैं। अभी हाल की बात है, शायद किसी पुलिस ऑफिसर का बच्चा था, वो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर थे, वो बिहार की बात है, और उसने बोला कि हमको नारियल पानी चाहिए। उसकी माँ ने कहा कि अब आएंगे तो परसों दे देंगे। उसने जाकर खुदकुशी कर ली। हम आज बहुत वक्त से अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे देते हैं, बोलते देखिए 2 मिनट में यूट्यूब ऑन कर देगा, निकाल देगा। कभी हम इस बात की परेशानी अख्तियार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो रात को 2 बजे मोबाइल में घुसा हुआ वो क्या देख रहा है। अब मैं 2 हदीस की बातों को कोट करता हूँ। पहली हदीस है मुस्लिम की, उसमें कहा गया when a man dies, nothing lives on after him except 3 things: a continuing charity, that is philanthropy, knowledge he imparted that can benefit others, or a pious child who prays for him। कहा था कि जब इंसान दुनिया से वफात पा जाता है तो 3 चीज ही छोड़ जाता है पीछे। एक जो वो सरकार करता है, जो उसको कब्र में उसकी आसानी पहुंचाती रहती है। दूसरा जो उसको नॉलेज था वो किसी को दे के जाता है, इसको सदका जारिया बोलते हैं। और एक ऐसा बच्चा जो समाज के लिए एसेट हो, जो अपने मुल्क के लिए एसेट हो, अपने कौम के लिए एसेट हो, और वो बच्चा उसके मग़फ़िरत के लिए। To be like anyone except in 2 cases, the person upon whom Allah has bestowed wealth की नकल कीजिए, जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है और वो उसको बहुत हिसाब से खर्चा करता हो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। या फिर ऐसा इंसान जिसको अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, ज़हनियत से नवाजी है, और जो वो उसको समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल करता हो। दिल तो करता है आपसे और भी बहुत सारी बातें करूं, आपसे भी सीखूं, मैं भी जो जानता हूं आपसे बात करूं, लेकिन हमसे ज्यादा काबिल लोग माशाल्लाह स्टेज पर हैं, आप लोग भी हैं। आप लोग उनको भी सुनिए और मेरी दुआ है कि इस यूनाइटेड पीस फाउंडेशन अमन की तरफ कायम करे और काम करे और अल्लाह इसे अपने निगरान में रखे, इस तरह Really feeling very inspired, sir. Thank you so much for your valuable advice. Okay, so my takeaways today, sir, would be that we all need a sense of civility and self-regulation. The next takeaway that I got from sir's speech was that no effort to impose lawful regulation upon members of society can succeed in the absence of self-regulation. Our constitution was made only for a moral and religious people. We have this intention of doing anything and everything only for His pleasure and not to seek any fame, any glory whatsoever. Now moving ahead with a slight technical glitch, we have the award session coming up now. We will honor our volunteers and supporters who are the backbone of this great noble deed that we are doing for their selfless contributions and support. Their dedication has been very vital for our success. So to honor manager of Kashmir unit for special guest and distinguished contributor, yes, please to do the honors.
May Allah subhanahu wa ta'ala accept Uchi to please do the honors. I must say he has a contagious smile and this is a great sunnah of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I volunteer to Thank you, sir. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of them immensely for their dedicated efforts. The last volunteer of United Peace Foundation. It is my pleasure to invite Mrs. Aisha Kotecha stage. She is a founding member of Wisdom School and Hope and MA, along with several other degrees. Mrs. Kotecha is a dedicated social worker, philanthropist and educationist. To present the special award to Mrs. Kotecha for her support to this foundation, I would like to call upon Mrs. Sania Sunil to come and present this award to Mrs. Aisha Kotecha. Foundation, showcasing our mission, vision and the work we do. Please direct your attention to the screen. The seeds of this noble endeavor were actually sown in June 2007. Zia Ahmad, the founder, embarked on a journey from Kolkata to Kuwait, searching for employment opportunities to support his family. Little did he know that this journey would bring him a profound sense of social these foundations are always without marginalized life. Orphans, abandoned children, widows, and the destitute, irrespective of their gender, faith, caste, or creed. Welcome to the United Nations Foundation. United Nations is not a public organization established in 2014 and registered under the Public Act 1882 and the registration number 64941048 in the University at Jamshedpur, Rajasthan. To help surrender the life of orphans, destitute, widows, and hopeless children with a vision to spread peace, harmony, and brotherhood amongst the different religions, castes, and creeds. Our vision: empowering vulnerable orphans and the deprived sections of society to attain the right to protection, development, with love, care, and participation. Our mission: we aim to provide them with the care and support they urgently need. This involves offering a loving and nurturing environment where they can thrive and work. Our mission extends beyond mere survival. We strive to integrate these children into society, offering them and shelter. Our values are empowerment, inclusivity, transparency, collaboration, ethical conduct, community engagement, and continuous learning.
We are a democratic, non-political, non-regimental, and non-political organization. United Peace Foundation has 4 major programs: orphan sponsorship program, educational program, food program, and emergency relief program. Orphan sponsorship program. Orphan sponsorship is a crucial lifeline for many orphan children. The United Peace Foundation identified those in need through surveys with school principals, the local community, and widows who approach the office for aid. The foundation provides sponsorship for orphans living with their mother or guardian, covering education, nutrition, healthcare, and festival gifts. Over the past decade, it has supported 140 children on a monthly basis and currently sponsoring 22. However, many more children remain on the waiting list, eagerly hoping for their turn to receive support in educational programs. In 2015, we established an open school in Saraikela, Kasaragod to uplift underprivileged children through free education, providing books, notebooks, and stationery. Due to the lack of resources and space, the school closed in 2018. However, the United Peace Foundation continues supporting educational expenses for poor students and orphans living with widows, mothers, or guardians, covering school fees, books, uniforms, and other essentials, spending roughly $10,000 to $30,000 annually per student. The foundation also launched the Life Institute, a tuition center offering free classes to orphans and underprivileged students to bridge the educational gap. Monetary assistance in the form of food parcels serves as a lifeline for families with no income or breadwinner and families headed by widows, in accordance with the criteria set by the foundation. Under the food program, we have launched a food program. Under the food program, we aim to distribute food kits to approximately 300 families every year in the month of Ramadan. In the year 2023 to 24, we distributed nearly 220 food parcels to families in need. During the COVID-19 crisis, our foundation stepped up to support vulnerable families facing unprecedented hardships. In 2020 and 2021, we worked tirelessly to distribute thousands of meals and ration kits by creating distribution centers in different locations, ensuring that those in need had access to essential nutrition during lockdowns. Understanding the critical health challenges many faced, we also provided medicines to families struggling to manage their health. Our dedicated volunteers mobilized quickly, reaching out to the most marginalized communities and ensuring no one was left behind. Through these efforts, we aimed not only to alleviate immediate suffering, but also to foster a sense of hope and solidarity within our community. The resilience and compassion demonstrated during this crisis highlighted the Foundation's commitment to serving those in need, reaffirming our mission to uplift the most vulnerable members of society. The impact story. Imam, a double orphan, faced a tough start in life. After losing both parents, he and his 2 sisters were raised by their grandmother. At just 5 years old, the United Peace Foundation recognized his critical need for support and stepped in to sponsor him. This support provided Imam with education, clothing, food, and healthcare. With the Foundation's help, Imam excelled, passing his 10th grade exams. His dedication and hard work really paid off, and it was amazing to see him achieve such great results. Today, he's pursuing a diploma in civil engineering at Al Kabir Polytechnic, thanks to a scholarship from the Foundation. His words, "The support from the United Peace Foundation has been my guiding light, truly captured his gratitude. I can't express how much their support has meant to me. It has truly been my guiding light. Imam's success is an inspiration to many, proving that
provide support, anything is possible. 2015 से हम लोग को यूपी मुकम्मल मिल रहा है। मेरा बेटा का वही यूकेजी से मिल रहा है और 7 में पढ़ रहा है और बेटी का 2 क्लास से मिल रहा है। अभी 10 में से नहीं रही है और पढ़ाई में लोग अच्छा नहीं चल रहा। हम लोग अभी मेरा आदमी का स्कूल में जिसका क्या बेटा दीदी है अच्छा काम करने राशन वगैरह सब मदद करते हैं। अल्लाह ये अच्छा रखे वो हम लोग देखने लगते हैं। हम लोग को और हम लोग The United Peace Foundation honored with the prestigious NGO of the Year for Child Rights Initiative by the Humanitarian Excellence Awards, presented at Radisson Blu, New Delhi. His recognition reflects our unwavering commitment to supporting orphans, underprivileged children, and vulnerable communities, showcasing our dedication to making a meaningful impact in society. That was indeed an insightful video. माननीय अतिथि आदरणीय अतिथि आज हम यहाँ यूनाइटेड पीस फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो पिछले 10 सालों का सफर याद करना बहुत खास लगता है। इस सफर में हमने मेहनत लगन अपने दोस्त के प्रति अटूट विश्वास के साथ काम किया ताकि हम समाज में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला सकें। आज केवल हमारी नहीं बल्कि उन लोगों की भी है जिनकी जिंदगी में हमने सुधार लाने की कोशिश की। ये सफलता उन लोगों की भी है जिन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी, उन लोगों की भी है जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। इन 10 सालों में हमें जितना भी पैसा मिला उसे जरूरतमंदों की मदद के लिए अच्छे से खर्च किया गया है। हमने हर जगह ध्यान रखा है एक पैसे का सही काम में लगे। आइए एक नजर डालते हैं हमारे 10 साल के फाइनेंशियल सफर में। The Peace Foundation has journeyed from humble beginnings to becoming a beacon of hope for countless orphans, widows, and the destitute. Our financial journey reflects not only the generosity of our donors, but also our commitment to transparency, accountability, and efficient utilization of funds to make a real difference in the lives of those we serve. In our initial years, funding was modest, sourced primarily through personal contributions from our founder, Dr. Zia Ahmad, and a handful of generous well-wishers. Despite limited resources, we managed to launch essential programs focused on providing nutritious food, healthcare, and educational support for orphaned children. Our emphasis was on building trust within the community and proving that even small contributions could create meaningful change. Over the past 10 years, United Peace Foundation has made significant strides in transforming lives and uplifting communities through our various programs. Here's a look at our financial impact. We have invested approximately 4.8 million rupees in our orphan sponsorship and education programs, ensuring that countless children receive the support and education they deserve. Our Ramadan food program and dietary assistance program brought relief to many, with an expenditure of around 2.6 million rupees over the decade. Through our Qurbani program, we provided essential meat distribution, spending a total of 61,700 rupees. During emergencies, we have always stood by those in need, with an expenditure of 5,09,169 rupees on our emergency assistance program. For effective and efficient management of our initiatives, the
Foundation's administrative expenses over the past 10 years totaled around 4,25,000 rupees. In total, the United Peace Foundation has spent an impressive 8.396 million rupees over the last decade on serving humanity. During this time, we have collected a total donation of approximately 10.25 million rupees, thanks to the unwavering generosity of our supporters. Currently, our total available balance stands at 18,35,691 rupees, which includes fixed assets valued at 1,94,578 rupees. Our capital fund, as of 31st March 2024, amounts to 16,46,113.46 rupees, enabling us to continue our mission of bringing hope and positive change to those in need. Our upcoming project, the construction of an orphanage. There are many orphaned and abandoned children whose only shelter is a piece of plastic sheeting, living day to day with a high risk of abuse and exploitation. To address this urgent need, the United Peace Foundation has set a target to build an orphanage. This facility will provide comfortable rooms, clean water, nutritious food, hygienic toilets, and playgrounds. Constructing this orphanage requires a substantial amount of funding, and we appeal to donors to come forward and help make this project a reality. Women Empowerment Program. This initiative will focus on providing women with the skills, resources, and support they need to become self-sufficient and active participants in society. Family Counseling Program. We aim to offer counseling services to families facing challenges, promoting mental health and well-being through professional support. Career Counseling Program. This initiative will assist individuals in identifying their strengths and career opportunities, providing guidance on education and job placement to enhance employability. Health Program. This program will focus on raising awareness about health issues and promoting preventive care, ensuring families have access to vital health information. Medical Assistance Program. We plan to provide essential medical supplies and support to those in need, helping to bridge the gap in healthcare access. These programs reflect our commitment to fostering a healthier, more empowered community. This journey has only been possible because of the unwavering support of our donors, partners, and volunteers. Together, we've made a real difference. ट्रांसपेरेंसी हो, सो सारे वॉलंटियर्स जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो बिना झिझक के करेंगे. It was a wonderful video that showed us the amount of efforts that and pain everybody has taken to keep the accounts and to be responsible for each penny that was collected. This magazine is a reflection of our journey over the past decade, showcasing the stories of resilience, hope, and transformation that have emerged through our efforts at the United Peace Foundation. I would like to invite our founder, invite all the esteemed guests to please come up on the stage, and I would also like This magazine not only highlights our achievements but also serves as a reminder of the collective power we have when we come together for a common cause. This segment is proudly sponsored by Mr. Kashif Kamran and Mr. Hamid Siddiqui, and we thank them for their commitment to our mission. Copies will also be distributed to our guests. We hope you
by his presence today. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Ramesh Kumar ji to the stage to share a few words of wisdom and inspiration. मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय शिक्षक श्री महेंद्र नारायण झा मधुप सर, प्रिंसिपल अल कबीर, वारिस इमाम सर, नवीरिया स्कूल के प्रिंसिपल नरेश सर, यहाँ उपस्थित अतिथिगण सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं यूनाइटेड पीस फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर जिया अहमद को बहुत सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने काफी लगन एवं कड़ी मेहनत से इस फाउंडेशन को खड़ा किया। उनका समर्पण और दूसरों की मदद करने का जज्बा तारीफ के काबिल है। अपने शानदार कैरियर और आरामदायक जिंदगी को छोड़कर समाज की सेवा के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी को समर्पित किया, जो कि आसान नहीं है। डॉक्टर जिया अहमद जी ने जिस तरीके से इस फाउंडेशन को शुरू किया, कई लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाया, वह सच में प्रेरणादायक है। आज जो भी अच्छे बदलाव हम देख रहे हैं वो उनकी मेहनत और सोच का नतीजा है। साथ ही मैं इस फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स पदाधिकारी गण को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से डेडिकेशन के साथ इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया। आपकी डेडिकेशन, मेहनत और लोगों को मदद करने का जज्बा इस फाउंडेशन की असली ताकत है। आपने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया बल्कि भूखों को भी खाना खिलाया, जो जरूरतमंद थे उन्हें भी मदद पहुंचाई। आपने यह दिखा दिया कि मिलकर काम करने से कोई भी काम असंभव नहीं होता है। जैसे अनाथ बच्चों की एजुकेशन, विधवाओं का सपोर्ट और उन लोगों को सहारा दिया जिन्हें सोसाइटी ने भुला दिया था। ये सब करना आसान नहीं था, लेकिन डेडिकेशन और टीम वर्क से इसे मुमकिन बनाया। पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हुए मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं साझा करता हूं आप सभी लोगों के बीच में। 2015 की बात है, मुस्कान चलाया गया था जिसमें मुझे टीम के साथ में दिल्ली भेजा गया था। वहां छोटे बच्चों, अनाथ बच्चों, बच्चियों को रेस्क्यू करा करके लाना था। वहां बहुत सारे लेबर बच्चे, लेबर चाइल्ड, लड़कियां जो कि झारखंड एवं अन्य स्टेट से वहां जाते हैं और वहां काम करते हैं, बदले में वो वहां से अपने फैमिलीज को पैसे देते हैं। वहां जाकर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे अनाथाश्रम में पल बढ़ रहे हैं। उनसे बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि वो बहुत ज्यादा बच्चे जो है झारखंड के हैं और उड़ीसा स्टेट के। उन बच्चों को वहां से लेकर के झारखंड आना भी एक बहुत मुश्किल भरा काम था मेरे पास, और बच्चे बहुत ज्यादा थे और उन्हें वहां रेस्क्यू कराकर ट्रेन से वहां से वापस लेकर के झारखंड आना था। वहां मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिला था डिपार्टमेंट के द्वारा, मैंने वहां
कई जगहों पर पुलिस की सहायता से रेड भी किया। वहां की जो लोकल दिल्ली पुलिस है उनकी सहायता से मैंने रेड भी किया, पर जहां कहीं भी रेड किया वहां बच्चों को हटा दिया जाता था। और इंक्वायरी के दौरान ये पता चलता था कि ये बच्चे जो है साड़ियों में जो बारीक काम होता है वो इन बच्चों से वो काम लिया जाता है। तो मैंने वहां लोकल लोगों से इसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया तो पता ये चला कि ये जो छोटे बच्चे हैं उनका आंख तेज होता है बनिस्पत एक बड़े जवान आदमी और एक बुजुर्ग आदमी के बनिस्पत, इसलिए उनसे बारीक काम लिया जाता है। मुझे बहुत दुख पहुंचा। मैंने पूरे दिल्ली में घूमकर ये पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसे बच्चों को कैसे रेस्क्यू कराया जा सकता है, क्योंकि वहां ये भी है कि वहां लोकल जो दलाल हैं वो भी इन लोगों से मिले रहते हैं। जो बच्चों से ये इस तरह के काम कराते हैं वो मिले रहते हैं। और जैसे मैंने इंफॉर्मेशन दिया और यहां से इंफॉर्मेशन मिला कि अभी फिलहाल जो है वो आप छोड़ दें, आप अनाथ बच्चों को वहां से आप रेस्क्यू करा कर लाएं। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता रहा कि इन बच्चों को कैसे उसको रेस्क्यू कराया जाए। वहां रखा जाता है ताकि जो है सरकार से जो है पैसे लिए जा सके और उनकी अपनी रोजी रोटी चलती है। वो एक तरह का व्यवसाय बन चुका है। वहां 20 बच्चों को रेस्क्यू कराने में सफल रहा और वहां से उनको ट्रेन से उनको लाना भी यहाँ बहुत मुश्किल काम करते। कई बच्चे आना चाहते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो नहीं आना चाहते थे। उनको मैंने रेस्क्यू कराया, रेस्क्यू करा करके वहां उनका ट्रेन में टिकट बुक किया और उनको आनंद विहार स्टेशन पर लाया। और वो बच्चे ऐसे थे कि इधर से उधर बच्चे इधर उधर छटक जाते थे, जिनको निगरानी रखना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसी तरीके से हमारी टीम जो है उनको ट्रेन में चलाने में सफल हुई और उसमें से 2 बच्चे ऐसे थे कि जो भागने के लिए जो है वहां ट्रेन से भी भागने के लिए तैयार हुए थे, किसी तरीके से ट्रेन से उतरकर भागते हैं। फिर उनको हमने अपर बर्थ पर उनको बैठाया, वहीं सुलाया और रात भर जगता रहा कि नहीं ये बच्चे भाग है तो मेरी सर्विस जो आपस में पड़ जाएगी। साथ ही साथ इन बच्चों को भी पता नहीं फिर क्या होगा। फिर वहां से मैं लेकर के आया, उसमें से 2 बच्चा जिसे मैं कांकरे के एक अनाथ आश्रम में ले जा करके रखा, वहां डिपार्टमेंट से ऑर्डर लेकर के। वो बच्चे ऐसे मेरे से घुल मिल गए थे कि अक्सर मैं उन लोगों से उन बच्चों से मिलने जाया करता था। वो बोलते थे कि अंकल आप, मैंने कितना भी प्रयास किया कि नहीं चलो तुमको मैं ले चलता हूँ तुम्हारे माँ बाप के घर, लेकिन वो लोग नहीं गए। पता नहीं उनको क्या कारण रहा, उसकी जानकारी मुझे उन लोगों से नहीं मिल सकी। तो इस तरह का एक वाकया था। ये फाउंडेशन जो है इस दिशा में बच्चों, अनाथ बच्चों, महिलाओं को उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं आज गांधी जयंती के अवसर पर जो इस महात्मा गांधी ने हमें सत्य और आपको और पूरी टीम को